ओके, तो कल मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि यार कल काफ़ी से बीमार हो गया था, कह सकते, राइट। और अभी भी उतना ही बुरा लग रहा है। यार एक क्यों है और इसी टाइम पे क्यों हो रहा है पता नहीं, बट जो भी है लेट्स स्टार्ट। 151। If Z1 Z2 complex number satisfying Z1 square minus Z2 square का mod is equal to Z1 conjugate का conjugate हटा दो यार, बिकॉज वो फर्क नहीं पड़ता। just this thing रेफरेंस ले लो, which is Z1 square plus Z2 square minus, हाँ तो फिर Z1 minus Z2 इस पूरे चीज का स्क्वायर, राइट। सो लाइक इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली, राइट। सो फॉलोइंग मे बी करेक्ट, सो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू, राइट, अंडरस्टूड। मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 जीरो हो जाएगा, मतलब कि Z1 इक्वल टू Z2, और ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। सो इसका एक मतलब हो सकता है कि अगर इसको लाइक स्क्वायर करूँ, अगर मैं इसको ऐसे वेक्टर्स लिखता हूँ, ये क्या होगा, Z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 Z1 वेक्टर डॉट Z2 वेक्टर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड का माइनस 2 Z1 डॉट Z2, राइट। तो वहां से Z1 डॉट Z2 जीरो हो जाएगा, विच मीन्स ये परपेंडिकुलर चाहिए अपने को, दैट्स द ओनली वे। सो आइदर Z1 इक्वल टू Z2 या फिर परपेंडिकुलर है। ओके, सो लाइक Z1 Z2 को आयोटा Z1 बोल दो, फिर निगेटिव आयोटा Z1 बोल दो, वही तरीका हो सकता है। स्केल कर भी सकते हैं अपन इसको, ओके फाइन। सो या लाइक आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई अपॉन 2 और Z1 इक्वल टू Z2, व्हिच मींस आई डोंट नो, फिर पता नहीं सब क्या करेंगे। बट या दिस लुक्स करेक्ट डी। और कुछ बोला है, ऐसा नहीं बोला है अच्छा Z1 नॉट इक्वल टू Z2 बोला है, सो दिस इज नॉट हैपनिंग, व्हिच मींस बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। 152 is letter of the word water is arranged in all possible ways and written as a dictionary, then the rank of the word water, हाँ ये मैंने एक बार देखा हुआ है। So पहले क्या रहेगा, ए रहेगा, ए के सारे वर्ड्स तुम्हें कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बाकी एक दो तीन चार, इज लाइक 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल फिर प्लस, अच्छा सिर्फ ए थोड़ी ना, डब्ल्यू कब आता है बाय द वे। सो इसको अगर डिक्शनरी वाइज देखें तो ए फिर एस आर फिर टी फिर डब्ल्यू, राइट। ओके, सो पहले तो ए ई आर टी आएगा, सो लाइक 4 फैक्टोरियल हर एक के लिए, बट एक्चुअली दैट टाइप्स ऑफ 4 बिकॉज या, और फिर प्लस। सो अब स्टार्ट वाला जो है वो डब्ल्यू आ चुका है, बट अब यहाँ से स्टार्ट कर लाइक वापस ए ई आर, ओ ए तो ऑलरेडी आ ही गया ना। ओके कूल, सो स्टार्ट में फिर ए आ जा रहा है, या और उसके बाद में क्या, उसके बाद में अपने को चाहिए टी, बट उसके पहले ई आएगा, राइट। सो वी हैव टू गेट इट ऑफ लाइक ई एंड आर। सो उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज दो यहाँ पे रहेंगे एंड दैट टाइम्स ऑफ क्या, सो अपन 3 फिक्स कर चुके हैं, सो 2 बचे लाइक 2 फैक्टोरियल बेस आई गेस, राइट। अपन डब्ल्यू ए और इनमें से कोई भी एक फिक्स कर चुके हैं, सो लाइक 2 बचे हुए एंड देन 2 फैक्टोरियल बेस, यस। ओके, तो वो वहां पे चले गए एंड देन प्लस। सो अब यहाँ पे अपन ई डाल चुके हैं, वेट व्हाट, सर ई नहीं क्या डालना था अपने को, टी, या टी डाल चुके हैं। ओके, फिर अपने को यहाँ पे ई चाहिए, ओके तो क्या क्या चला गया, डब्ल्यू चला गया, ए चला गया, एम आई श्योर 2 बचे होंगे, अच्छा डब्ल्यू ए और एक कोई तो भी और गया, या ओके दिस इज द थिंग। सो डब्ल्यू चला गया, ए चला गया, टी चला गया, क्या क्या बचा, ई और आर पे करना है, राइट। सो ई स्टार्ट में आएगा, लाइक ओके तो फिर एक ही, यस दैट इज द थिंग, विच मीन्स ये रैंक रहेगा इसका, ये इतने इसके पहले आए और फिर बाद में +1 प्लस वो खुद। सो 4 टाइम्स 4 फैक्टर 4, लाइक क्या 12 टाइम्स 2 I guess. It's 24. 24 times 4. Is that correct? It must be. 24 times 4 is just 8 and 16 is 96. So 96 plus ये कितना हो जाएगा, 4 plus 1 मतलब कि 101. So that's the rank. मतलब C. Next question. 153. 53 is यहाँ पे मर गया। In triangle ABC with usual notation, if R1 equal to 1 R, okay, R equal to 1, R1 is equal to 7 and R is equal to 3, then the triangle ABC is, okay मैंने देखा हुआ है ना, yes. So you know like R is equal to 4R product of, oops मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 capital R product of sin A upon 2 and then R1 RA जो भी है, that's equal to what, that's just 4R product of, नॉट एक्चुअली प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, कोसाइन ए अपॉन 2 कोसाइन बी अपॉन 2 एंड देन साइन ए अपॉन 2 आई थिंक। तो अपन क्या बोल रहे हैं वैसे, दैट मर गया सब कुछ,
राइट, R1 इक्वल टू 1 R। ओके, ये 7 है, यहाँ पे 4R चाहिए वाले। जस्ट लाइक सेइंग प्रोडक्ट ऑफ साइन A अपॉन 2 कितना होगा, R अपॉन 4R विच इज 1 अपॉन 12, एंड कोसाइन A अपॉन 2 कोसाइन B अपॉन 2 साइन A अपॉन 2 कितना होगा। How do I get you? Right, it will be like 7 upon 12, I think. Okay, very weird. So just divide, like you get like what, cot A upon 2 cot B upon 2, that is 7. Not very useful, is it? Whatever. So like cot A upon 2 cot B upon 2 is equal to 7. I guess it's इतना भी बुरा नहीं है, like okay, 7 cot A upon 2 basically is equal to summation of cot A upon 2. क्या 6 cot A upon 2 is equal to cot B upon 2 is cot C upon 2. How is that helpful? I don't know. God, this is not going to help. कुछ और तरह से करना पड़ेगा इसको. So ठीक है, we figured out like इसका आपने, but now what? 7 upon 12. Okay, this is a. अब क्या करूँ मैं इसका? You got this information. Is this equilateral obtuse acute angle which is not equilateral right angle? सारे साइंस तो पॉजिटिव हो गए. ओके, एट मैक्स एक कोसाइन नेगेटिव हो सकता है, राइट? सो इफ लाइक ए सबसे बड़ा एंगल था, देन दैट वुड जस्ट मीन ओके ओके दिस इज वियर्ड. सो ठीक है, लाइक वेट नहीं, यहाँ पे सी चाहिए, सॉरी, बट वॉट एवर. इसका मतलब हुआ कि सी और बी और सी अपॉन टू और बी अपॉन टू. ओह गॉड, दिस इज नॉट गोइंग गुड. नीड समथिंग. या I know so तुम सम जैसे लिख सकते हो, but then is it even helpful in the end? No, it's not. Okay, wait, think on it. Like cosine आ चुका है. What if I just do this -1? So यहाँ पे मुझे basically cosine of, that could be a nice thing to do. और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा sin A. हाँ, तो ये काम फिर -1 कर डालो. Who cares? Very interesting. Anyway, it's just ये -1 कर रहा हूँ, which means like यहाँ पे क्या cot A upon 2 cot B upon 2 minus sin, sorry, cosine. So it's like cosine of A upon 2 plus B upon 2, which is, or it should be C upon 2. Sorry, it's not A upon 2. मैं क्या यार आप सबसे वही लिख रहा हूँ. So just pi upon 2 minus A upon 2, मतलब कि क्या हो जाएगा, sin of A upon 2 upon sin C upon 2 sin B upon 2, that is equal to A minus 1 is 6, right? Awesome. Yeah, it's like sin A upon 2 A. Then just put that over here. So like sin C upon 2 sin B upon 2. That's just, oh awesome. So इसको मैंने वहाँ पे पढ़ा just 1 upon 6 times 12, I think so. Yeah, 1 upon 6 times 12 नीचे आएगा, right? और फिर उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन C upon 2 sin B upon 2. Oh, why even do that? Sin C upon 2 sin B upon 2 को put करो ना as sin A upon 2 upon 6. So यहाँ पे क्या चाहिए, sin A upon 2 का square upon 6 equal to this thing. So like sin A upon 2 is equal to 1 upon square root of 2 or -1. नहीं, like sin A upon, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, A upon 2 is 45 degree, A is 90 degree. So it is in fact right angle. So this is the answer. Next question. और कुछ है, like acute angle which is not equilateral. Okay, whatever. बहुत ही वेग डिस्क्रिप्शन दिया. इक्विलैटरल ऑब्ट्यूज एंगल, आई डोंट नो. राइट एंगल तो है, ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकता. सो ओके, 154. If the orthogonal square matrices A and B satisfy this relation where, okay, what, okay, determinant of A plus determinant of B equal to, okay, fine, A denotes, ठीक है ना, value of determinant of A plus B necessarily. Oh, orthogonal square matrices, huh? Necessarily, wait, what? Why would that be the case? Orthogonal, maybe this is somehow related. Oh, it's like, so basis vectors, maybe that would work. यहाँ पे 3 basis vectors आएंगे and then it's kind of weird. Okay, and B का negative में आ रहा है, and all you know is just these are actually negative, nothing else. But ये तो बहुत सारे अलग चीजों के लिए हो जाएगा, right? So determinant of A plus B, how do you even figure that out?
थिंक कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर पाऊँ इसमें. आई मीन इट कैन बी जीरो, इट कैन बी, यस, बट इज दिस नेसेसरली गोइंग टू बी जीरो? ओके, तुमने 3 into 3 मैट्रिक्स देखी, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है. Maybe like that. Okay, so like ये एक identity matrix है, this is negative identity matrix in 3 by 3 case. फिर ये जो चीज़ है that works out cool. But is that the only option? Is that the only option? एक मिनट, मैं फिर A inverse समझ, okay, that could work. So it's like this thing. A determinant of identity matrix plus A inverse, okay, of course. A inverse B. Okay, interesting. मुझे A inverse B somehow ढूंढना पड़ेगा. We know that determinant of A is equal to negative determinant of B, right? Okay, और ये so 1 upon determinant of A inverse is equal to negative determinant of B or something like that. So मतलब क्या determinant of A inverse B is just equal to -1. We know that for sure. Yeah, and this is like orthogonal. A inverse B orthogonal matrix because का inverse like reciprocal system, right? So वो हो जाएगा. Means sure तुम एक से, yeah, that is the thing, right? A inverse B orthogonal होना चाहिए. So then A inverse B, is that also orthogonal or something? You know, I mean, so diagonalize कर डालो. Yeah, that would work. Diagonalize the thing. Wait, no, but यहाँ पे जो rotation matrix है वो काम नहीं करेंगे. This is not going good. I think you can't have these things, right? भूल जाओ, ये सब एक्चुअल में शायद से हो भी ना रहा हो. Zero is the answer because एक केस में हुआ तो सब केसेस में होगा. I know गलत है, but whatever. 155 या फिर none of these हो सकता है क्योंकि necessarily zero नहीं है. That would be the thing. This is so stupid though. Something else. यानी ऐसा नहीं चाहिए अपने कुछ और. A plus B. What if it's just like a vector or something? Okay, what if it's a complex number? Right? And determinant is like, interesting. No complex numbers. Yeah. It's not necessarily zero. Wait, what? It's not necessarily zero. No, it's not. So for example, this is like rotation matrix by 60 degree, this is by negative 60 degree or something. Yeah, well that could work. Wait, nahi. But okay, वहाँ पे negative आने वाला है. Like okay, हमारा determinant तो still same हो जाएगा in that case. It's the negative of it, नहीं, but for 2 by 2 matrix हो जाएगी. That's not what I want. Why is this so complicated? And you determinant of them. ठीक है ना, whatever. Next question, 155. A committee of 3 persons is to be randomly selected from a group of 3 men and 2 women, and the chairperson will be randomly selected from the committee. Okay, 3 persons selected. Select करने from a group of 3 men, 2 women, and chairperson will be randomly selected from the committee. Okay, 3 person, right, or a chairperson. Okay, committee C chairperson. I can find. Probably that the committee will have exactly 2 women and 1 man, and the chairperson will be a woman. Is okay. So probably that the committee will have exactly 2 women and 1 man. 3 person को तुम randomly select करो, right? So yeah. So अपने को चाहिए it should have exactly 2 women and 1 man. God. It's like number of ways upon that number of ways. This is just not good, right? ठीक है ना, so exactly 2 women and हर जो individual है उसको तुम right like as unique देख रहे हो in that case, isn't that right? So 2 women and 1 man चाहिए अपने को. 2 women लाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? प्लस में ऑलरेडी दो दो ही तो वुमेन है यार, फिर तो एक मैन उसमें से. ओह दैट्स लाइक there's only 3 ways that can happen upon. टोटल कितने वेज हो गए? 5C3 बिकॉज अपने को 5 लोग में से 3 लोग चूज कर सकते हैं. ओके 5C2, 5 times 4 2 पर भेज दो जस्ट दिस थिंग. ओके 10 बेसिकली, राइट? सो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट 3/10 फॉर फॉलोइंग द कमिटी. अपने को उसमें से क्या करना है? कमिटी में से चेयरपर्सन विल बी अ वुमेन, राइट? सो फिर वो रैंडमली वापस सिलेक्ट किया, राइट? इट्स जस्ट 2/3 प्रोबेबिलिटी वो वुमेन रहेगी, which means 2/10 like 1/5. So A is the answer. Next question. I don't know ये correct है कि नहीं, but इतने short time में तो अपन यही कर सकते हैं. 156. A circle of radius 4 units is drawn through the points in
in which the hyperbola and this ellipse intersect. Length of the major axis of the ellipse is, अच्छा, ये hyperbola and this ellipse will they intersect and radius क्या है 4 units. Okay, wait, what? Well, that means like x squared plus y squared equal to, oh yeah, like x squared plus y squared will just be 4 in that case, right? Yeah, that does make sense. So just by guess check or something, isn't that right? Uh, your 4 points, like those will have that thing happening. Wait. It's a 4, it's like okay, x plus y square equal to 4 का square 16 वहां पे डाल देते. Okay, we'll have to somehow manage these such that ये form हो जाए. Right, so वो जो भी points, wait, isn't that like, oh, I understand क्या हो रहा है यहाँ पे. It's like this thing x square फिर you just got 1 upon, actually you know what, simplify this a bit. So ये ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस मुझे समझा आपने को क्या करना है इक्वल टू 6 और ये जस्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू एक काम करो 1 अपॉन a स्क्वायर आई जस्ट पुट कैपिटल A, इट्स दिस थिंग ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 भी है. सो या x स्क्वायर कॉमन निकालो, इससे एक वेक्टर बनाओ एंड देन यहाँ से एंड देन x स्क्वायर y स्क्वायर आर टू थिंग्स दैट दिस हैपन, मतलब लीनियरली वो इंडिपेंडेंट या linearly dependent होगा ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स पे, which means the determinant 2a1 -3 1 1 6 1 16, oh yeah that's equal to 0. That explains a lot. So एक काम करो इसको 2 टाइम्स करके वहां से सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट 2a1, so ये सब्ट्रैक्ट किया है, it's just -3 1 1 0, it should be सब्ट्रैक्ट में ऐड किया ना, okay fine, just 3 and oh god, not exactly like this. Okay, this is not going good. ये 0 आ पाएगा, इससे कुछ अच्छा चाहिए अपने को, फिर अपनी डायरेक्टली ढूंढ भी सकते हैं ना, who cares. Yeah, that would be the thing. So just मतलब मुझे सिंप्लीफाई तो करना है इस तरह से. थिंक ये -3 की इसको करने है. नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करो इसको, 2a1 -3 1 9 सब्ट्रैक्ट किया एंड देन 0 1 15. ओके, उसमें से सब्ट्रैक्ट डालते हैं. I mean, okay, that would work. Okay, let's just subtract that. It's this thing. This is just gonna take forever. Yeah, तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना. ये ऐसा क्यों हो रहा है? You can subtract 2 times of that. Something. जो भी है नॉर्मली इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं ना, because there's no other way. तो फिर करो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेस्ट लिखते a1 1 1 1 16 and 2 -3 6. Okay, so पहले क्या आएगा, a times 6 minus of minus is like plus 48 because yes, and then -1 and you want this thing, so -3 -2 and then +1 times, oh shit, that should be +1 of that. Okay, ये ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस आएगा फिर नेगेटिव एंड ये माइनर है, so just 6 minus 32 I guess because yeah. So क्या ये 54a is equal to 5 plus what is the third minus 6 I guess, which is क्यों इसको कर रहा हूँ 32 - 6 बस इसलिए रहने दो उसको. यहाँ पे -1 आएगा, just 31, मतलब कि तुम्हारा जो a है that is 31/54 which doesn't look correct. I mean ये तो सही नहीं हुआ. What, seriously, how did this happen? Oh, it should not be, it should just be 6 minus 32. समझा क्या गलत है. It's not this, it's actually this thing, 5 plus 6 minus 32, मतलब कि कितना, 11 minus 32 यानी कि -21. So a is this 21/54. हाँ, still doesn't help. Okay, ये क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 times of 7 just -7/1 and then you got 24 just 18, so -7/18. नहीं, ये तो अजीब हो रहा है. Then nothing major except of ellipse is.
You want this thing, right? It's gonna be A, but A तो कुछ अजीब ही आ रहा है, right? Okay, something else because radius 4 units is drawn through the. What's the problem? 4 points. I get it. It's just क्या प्रॉब्लम है? ये तो सही नहीं हो रहा है यार. This should not be working like that. So अपन ने क्या गलत किया? Just A 6 plus 48. Yeah, I believe in that. Just -1. फिर 6 minus 30. Yes, that's the thing. और फिर +1 times -3 minus 2. Yes. So 54A is equal to 5 plus 6 minus 32. Yes, which is what 11, which is 21, of course. So A ये आ रहा है. That doesn't make any sense. This is definitely is 54, right? हाँ सही तो है यार. So that just means कोई अपने को पता नहीं इसका आंसर क्या आने वाला है. But this should have worked. अगर ये तुम्हें x और y स्क्वायर मिलकर ऐसा हो रहा है, then that means this is working. You can't. So 1 upon capital. Okay, 1 upon a squared is like a squared. That's negative? Are you serious? No, this is wrong. This is just wrong. Yeah, this is just not making sense. यार ये तो सही नहीं है. This is not correct. So मतलब क्या हुआ? That no, this doesn't have solution. Okay, then none of these. So D is the answer. Next question. Oops, D. Yeah, 150. Because negative आ रहा है यार. This doesn't make sense. इसका एक ही मतलब है कि एक्चुअल में कभी इंटरसेक्ट होते ही नहीं है. इनफैक्ट, राइट. It's the only way this can be. Is that the case? This is like square root of 3 of. But इसका मेजर एक्सिस तुम नहीं यार, तुम उसको इनफ स्ट्रेच करोगे तो अपने आप हो ही जाएगा ना. So radius of 4. Oh, okay, okay, okay. 4 units through this hyperbola. हाँ, okay. Just figure out कि वो कहाँ पे intersect होते हैं because x squared plus y squared equal to 16. Okay, just move on. Because अगर वो काम करता था तो फिर वो भी काम करता ना. This is not going to help. 27. Reflection of this plane on this in this plane is एक प्लेन का रिफ्लेक्शन दूसरे प्लेन पे. uh, ये मैंने कहीं नहीं लिखा. लाइक तुम्हारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है, ये तुम्हारा एक प्लेन है, तुम्हारे पास में दूसरा एक प्लेन है, उसका नॉर्मल वेक्टर तुम इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये जो रहेगा इसमें ये नॉर्मल वेक्टर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट? विद रिस्पेक्ट टू दिस गाइस. सो बेसिकली इट्स लाइक ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो चुका है. सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट था विद दैट थिंग, तुमने इसको -2 टाइम्स करके, यस दैट्स द थिंग. सो ढूंढो ये कंपोनेंट कितना है. क्या था अपना ये जिससे रिफ्लेक्ट करना है, दैट इज सो right. N hat is basically this thing. N hat नहीं, just n vector जो जिसपे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिससे रिफ्लेक्ट करना है, that is this thing 1 2 3. और जिसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, so this call is a vector, that is what, that is 2 3 4. So let's see क्या होता है. And then तो तुम्हें एक्चुअल में चलिए यहाँ पे ये सब अलग अलग हो रहा है, राइट? या just have to figure out the vector क्योंकि 47 तो हर जगह पर है. Anyway, just try it out. So ये कैसा होगा? God, plot निकालो upon magnitude से divide हो. This is just this dot that with n vector upon n vector का magnitude 2 times आएगा. So just upon 1 plus 4 plus 9, यहाँ पे dot product ले लो, just 2 plus 6 plus 12, and that along this vector just 1 2 3, which is what, 8 plus is like 20 20 upon 5 plus 9, whatever, 14 14, and then you got 1 2 3. Okay, this is 10 upon 7 times 1 2 3. So इसको negative 2 times negative 20 आ जाएगा यहाँ पे. And now add this to the original vector which was just 2 3 4. इसको reduce करने के लिए just add multiply by 7. So basically क्या हो जाएगा, just 14 21 28 minus
20, 40, and 60. Yeah, this will be what negative. एक काम करो इसको यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कर डालो because that looks better. So ये और 2 से भी इनफैक्ट रिड्यूस कर डालते because okay 2 से अभी नहीं रिड्यूस कर सकते. This is what 6 and this is 19. Okay, yeah. और ये क्या आएगा 2 and then you start like 5 minus 3 so 32. So 6, 19, 32. That's our vector. Which means B is the answer because वही एक वेक्टर जो के काम कर रहा है. Next question 158. Yeah, that should be the thing, of course. Uh, Next is least value of this function is so 2 power x square plus 3 plus 16 upon 2 power x square plus 2 power x square plus 1 को एक बार कॉमन ले दो. अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1. हाँ ओके. So u equal to 2 power x square plus 1. Just like what it is 2 plus u plus 16 upon u. This thing is bigger than or equal to 2 square root of 16 which is 2 times of 4 यानी कि 8. कब होता है ये when you have u square equal to yeah like u square equal to 16 मतलब कि u equal to 4. Can this be 4? Definitely can be 4. मतलब चलता है. So that just means yeah like 2 plus okay plus 2 यहाँ पे था ही in fact. So it's just 10. 10 is the minimum value. Okay. So B is the answer. Next question 59. 59. 59 is the condition that this parabola and this parabola have a common normal positive real numbers. Okay, fine. Other than the axis is दो पैराबोला है उनको क्या चाहिए कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस. ठीक है ना. पहले इसका नॉर्मल क्या है y इक्वल टू नेगेटिव गॉड नेगेटिव कैसे है इसमें y इक्वल टू mx माइनस am negative tx plus 280 plus 80 cube, right? Okay, this will be 280. Okay, negative 2am आएगा. Then 80 cube, so just negative 80 cube. Okay, fine. Plus 80 cube ऐसा. ठीक है ना. और इसमें क्या है just y is equal to m x पे क्या होगा x minus b minus 2a की जगह पे c से लाइक करना है 2cm minus cm cube. मतलब एक ही तरीका होगा which is when you have mb minus 2cm sorry plus 2cm plus cm cube वो m हटाई दो यार. Either m equal to 0 which is not what we want or you have b plus 2c plus cm squared is equal to 2a plus am squared which means उसको उधर मुझे just yeah just c minus a times m squared is equal to 2 times of a minus c minus b. मतलब कि m squared is just equal to negative b. Wait, what? This doesn't make any sense. मतलब ये तो अजीब हो गया. Okay, you will have to divide. So just need 2 plus b upon a minus c. So the only way is कि ये चीज पॉजिटिव हो मतलब कि p is bigger than or like p upon 2 is bigger than a minus c which c minus c is less than p upon 2 which is b. Next question. Because yeah so we're just assuming कि a पॉजिटिव चाहिए मतलब a बड़ा चाहिए b से. तो अगर ये नेगेटिव रहा ये चीज नेगेटिव है then they just messed up. Doesn't make any sense. So 150 तो ये तो हो गया. 160. 160 is what? Wait, just wait. 160 is area of the region bounded by this curve and that curve. Okay, 1 upon plus x square. Seriously, I can't believe this. 1 minus ये. Okay, very interesting. So 1 upon 1 plus x square at x equal to 0 this is just 1. फिर ये 1 plus x square is increasing. This is like a decreasing thing. And x equal to infinity is 0 हो जाता है. So something like yeah that. इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा like negative x पे 0 होगा ना डेरिवेटिव. So it's like this. I don't know. ऐसा कुछ कभी है. And then you want 1 minus this thing. So at x equal to 0 is just 0. Okay. Then you want 1 minus. Okay. I get it. So ऐसा चाहिए ना. So you mean this area. Awesome. So ये 0 से ये point कब रहेगा when it's like equal to 1 upon 2 चाहिए. Just 1 plus x square equal to 2 मतलब कि x is equal to 1. That's when this happens. Like integration equal to 1. And yeah, so just 1 minus 1 upon square minus of this thing just 1 minus 2 upon 1 plus x square and then dx. So ये तो just 1 हो गया पहला and then minus 2 tan inverse of x from so like 2 times
pi upon 4, this pi upon 2, so 1 minus pi upon 2, which is like 2 minus pi upon 2 or something. Some odd चाहिए अपने को, right? Well, yeah. Wait, if you subtracted that, it should be positive. It's not positive. How is that not positive? Pi upon 2 is actually bigger than that. That does not make any sense. 1 minus. Oh, okay. ये वाला जो है, that is 1 upon. So, okay, fine. It should be negative of that. Anyway, just pi upon 2 minus 1, which means pi minus 2 upon 2, which is B. Next question, 161. Let's go, 161. A variable circle cuts each of the two circles orthogonally. The variable circle passes through two fixed points whose coordinates are. Okay, एक circle है. It cuts each of these two circles orthogonally. हाँ ठीक है, समझ गया. Fine. So it's like along the it yeah. So the variable circle passes through two fixed points whose coordinates are. So ये जो इसका center है, that's on the radial axis. I understand that. And then इसका जो radius है, that's it's kind of a weird thing, isn't it? Yeah. So the radius squared है, that is equal to the s thing. वो तो इनका सेम ही हो जाएगा, right? हाँ. Wait, what? Passes through two fixed points whose coordinates are. I've seen this somewhere. I don't know. Oh, wait a second. I don't think ये ऐसा होगा. अच्छा, इसको ग्राफ करके देखते हैं. पहला सर्कल कैसा है? x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस करना ही पड़ेगा ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड देन या और ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड प्लस 4 प्लस 9. ओके, सो एक है 1,0 पे एंड एक है 2,0 पे और इनके जो रेडा है जस्ट 1 and 3. ये तो 1 है, ये इसमें से पूरा ऐसे कर देगा, राइट? ओके, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द अदर सर्कल, its radius is like 3. Wait, what? Okay, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. Oh, not good. इसकी रेडियल एक्सिस क्या होगी? Can't figure that out. ठीक है ना, जो भी है, ये करना क्या है? It passes through what fixed points? It cuts this orthogonally. कुछ खास इसमें दिख तो नहीं रहा है मुझे. That is like 1, 2, 2. It should be working out. It's not working out for some reason. हाँ. So like radial axis क्या होगी? So radial axis is just minus 2x is equal to 5. X equal to negative 5 upon 2. Yeah. Which is okay. That's very weird. So ये इस पे center कहीं तो भी आने वाला है. And then it has to pass through two fixed points. I don't understand कैसे तुमने ये decide कर लिया. हाँ. But then ये तो intersect भी नहीं कर रहे. Cuts both of these orthogonally. ऐसा कौन सा circle है that does this? It passes through radial axis. I get that, but then through two fixed points. क्या गड़बड़ हो रही है? इसका distance from that, like r squared is equal to s, right? S is just the tangent to these guys. Okay. Wait, ये सारे points का same s value है. Wait a second. नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा ना. S is just the tangent over there. सही से नहीं हो रहा है. नहीं, it's just very not good. Subtract and just get like what? Minus 2x minus 5 equal to 2x plus 5 equal to 0. X equal to negative 5 upon 2. और ये कैसे गंदे वाले कोऑर्डिनेट्स आ रहे? ओके, ये नॉर्मली तो नहीं हुआ है. या जस्ट नॉट नॉर्मली अपने को नहीं करता है, राइट? ठीक है, मैं जस्ट पैरामीटराइज दिस सेंटर. सो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इट्स negative 5 upon 2 comma just say y something. Okay, so what will our s value be? Or s is, just put this in there, x minus 1 का square plus y square minus 1, right?
or you could always go with x times x minus 2. Yeah, so like what is x times x minus 2? It's just negative 5 upon 2 times ye cheese minus 2, which is negative 9. Yeah, like negative 9 upon 2. I guess that is the thing. Okay, and then plus y squared. So just plus y squared. Yeah, that's the s value. Or similarly, इसके लिए भी रहेगा because so x or minus 4x minus 5 is like x minus 5 times x plus 1. So that's somehow work out, I guess. जो भी है, that is the thing. Just s is equal to what? It's 45 upon 4 plus y squared. You want a point such that, right, for any y, तुम्हारा जो r squared है, that's equal to this thing. So distance from this, right? Okay, let's just say वो point h comma k है, then what is like h minus 5 upon 2 का square plus y minus k का square, that is equal to this thing for all kinds of y's. एक ही तरह हो सकता है लेकिन k equal to 0 and h ऐसा okay, understood. So h is equal to what? 5 upon 2 plus or minus square root of this thing. So just upon 2 sort of 45. Yeah, okay, that makes a lot of sense. So it's like 3 square root of 5, I guess. Yeah, that looks correct. So just 3 square root of 5. So 5 plus minus 3 square root of 5. It's not negative. Negative कैसे होगा? Oh, okay, that's why negative. Fine. Yeah. So actually negative ही होगा. Fine. It's negative 5 upon 2 plus minus 3 square root of 5 upon 2. Which is B. अजीब था ये. Never seen this before. 162. 62 is number of straight lines equidistant from three non-collinear points in the plane of points equals. Huh? Equidistant from three non-collinear points. So equidistant चाहिए. Wait, what? Okay, this is not going good. ऐसा क्या हो सकता है that these are like equidistant? This happens when suppose तुम्हारी line जो है that's just this thing ax plus by plus c equal to 0 and let's just say तुम्हारे 3 points x1 है और जो भी है, right? So what you mean is like magnitude of ax1 plus by1 plus c1 that's equal to magnitude of, yeah, so basically वो चीज, right? कि जो squares है उनका same value आ रही है, that would be one thing. Okay, so ऐसे कितने straight lines हो सकते हैं such that this happens? But ABC, like, oh, okay, 3 equations, I guess. Yeah, 3 equations, 3 variables, because A, B, C ये तीनों की तीनों constants है. Oh, sorry, I think तीनों variables है, then x1, y1, हाँ, those are actually constants, right? Yeah, just like plus minus में करा. अच्छा, तो what you can do is understood. So एक में प्लस ये करो फिर दूसरे में नेगेटिव ऑफ द सेम थिंग एंड सो ऑन, राइट? x1 x2 x3 तुम्हारा जो वेक्टर आएगा, राइट? x1 x2 x3 is that vector and then just have y1 y2 y3 is that vector. Okay, and then 1 1 1 and this matrix applied on ABC, that's equal to, let's just say वो distance जो है from that is just d, right? So like, yeah, plus minus d आ सकता है, so just plus minus d plus minus d plus minus d, और ये plus minus independent है एक दूसरे के, right? This is the thing if they have to be equidistant. Wow, तो अजीब हो रहा है. Right, अब क्या? Now what? You can send that C over there or something. If this thing is like invertible, then you're really good to go, right? But okay, so these are not collinear, right? Which means कि हाँ, if these are not collinear, इसका determinant effect 0 नहीं होगा because they subtract that x1 y1 subtract करो, like okay x1 x minus x, हाँ, तो उसका determinant 0 नहीं होगा, which means it actually has an inverse. So ABC equal to जो भी इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो अप्लाई करो एंड देन ऑन दिस गाय. सो इसमें 3 तुम वेक्टर्स डाल सकते हो और तीनों के लिए तुम्हें इनफैक्ट वैलिड आंसर्स मिलेंगे बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है. या बेसिकली लाइक वो इसका जो या ये फुल 3D स्पेस को स्पैन कर रही है मैट्रिक्स. आई गेस दैट मेक्स सेंस, राइट? मतलब इसका जो इनवर्स रहेगा दैट विल आल्सो डू द सेम. सो यस, दैट just means there are like
कितने इसमें, सो मैट्रिक्स वो तो सेम रहेगी, ओके, जस्ट 2 times 2 times 2, इसमें 8, वेट व्हाट, 8, 8 कैसे, ओके, मे बी उसमें से दो ऐसे रहेंगे जो आपको सेम वैल्यू, नहीं, अगर दो सेम वैल्यू देने लग गए तो हो गया फिर, दैट वुड बी नॉट गुड। वेट, बट डी तो, राइट, डी इज एक्चुअली अ वेरिएबल व्हिच मींस कि I don't understand this. Wait, what? It's like invertible matrix. इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, that's stated because three non-collinear points, right? Its determinant cannot be zero. इसका यही मतलब हुआ कि अपन इनवर्स आराम से लगा सकते हैं, then this would work. बट इसका मतलब हुआ कि ए बी सी जो वैल्यूज रहेंगे वो एक्चुअली अपने को हमेशा मिल ही जाएगी। ओह गॉड, मतलब कि एक्चुअली में इन्फिनिट नंबर ऑफ ऐसे स्ट्रेट लाइंस रहने वाले हैं which are equidistant, but that doesn't actually make any sense. ऐसा कैसे हो सकता है? How can this happen? एक्चुअली अपने को सिर्फ दो इक्वेशंस मिले। ओह या ओके, सो तीन इक्वेशंस ने अपने को दो इक्वेशंस मिले, तीन वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई, राइट, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। सो या देयर विल बी एक्चुअली infinite number of such lines that are equidistant from three non-collinear points in the plane, the same plane. Wait, हाँ, तो ये तो लाइन सेम प्लेन में है ना, ओके, दिस इज इक्वल टू, राइट, ये अपनी लाइन है ऑफ कोर्स, एंड दिस विल एक्चुअली वर्क आउट बिकॉज वो सेम डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम दैट। यस, दैट जस्ट मीन्स infinite such points, or sorry, infinite such lines, right? It's just inverse apply karna hai on that, then you will get the thing. So like for example, what? जैसे तुम्हारा x1 y1 0 0 है, this thing 0 0, कुछ तुम ऐसा चूज करो जिसका तुम्हें इनवर्स आ रहा। आई डोंट वांट टू डू दिस एक्चुअली, आई डोंट वांट दिस टू हैपन, जो भी है विल सी क्या होता है। और कुछ अच्छी चीजें चूज कर लो, जस्ट 1 2 चूज कर लिया, पे 2 3 चूज कर लिया, या मतलब ये वेक्टर्स इट विल वर्क आउट। इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, right? It's not zero, and this applied on ABC, this actually gives us what, ये चीज, oh, oh, it's not infinite number of lines up to scaling, up to, okay, इक्वल टू जीरो है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ एबीसी के ऑर्डर पेयर्स नहीं चाहिए, तुम्हें उनको रिड्यूस भी करना पड़ेगा ना बाद में, समझा? ओके, इन दैट केस इट्स एक्चुअली वेरी इजी, बिकॉज इसको तुम क्या करो, स्किप skip this thing, it's basically this thing t, फिर 1 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1, और ये जो है इंडिपेंडेंट से, सो इट कैन बी लाइक 1 -1 -1, or it can be 1 1 1, or it can be 1 1 -1, or 1 -1 1, right? Am I going correct or not? somehow वो अपने को सेम चीज दे दे, like suppose a जो है उसको अपन, right, reduce by t and then you get like, so t को 1 पुट कर दो, we'll do that in the end, okay? So then इसमें 2 times 2 is like 4 तरह से हो सकता है, and okay, this is weird. Well, a cannot be zero. That's a, no, okay, ऐसा भी नहीं है कि जीरो नहीं हो सकता। uh, a और b दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, because that would just mean वो लाइन है ही नहीं इनफैक्ट। ये तो अजीब क्वेश्चन हो गया यार, मुझे लगा नहीं था ये ऐसा जाएगा। So then how do we do this? तुम्हारा एक कांस्टेंट ये वेक्टर है, तुम इस पे इनवर्स लगाओगे, राइट? You get something like that, right? Yeah. नहीं यार, this is not making any sense. Come on, think. There has to be something. ये जो है कितने वेक्टर्स रहेंगे इसमें? 4 वेक्टर्स, राइट? ऑफ कोर्स, लाइक 4 इक्विडिस्टेंट लाइंस, दैट व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, 3 तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे आई गेस। सो फॉर एग्जांपल मस्ट बी इक्वल टू ट्रायंगल, ओके, वो तो हो ही गए, राइट? 3 तो आराम से आ ही जाएगा अपने। फोर्थ वन, हाउ डज दैट इवन मिक्स? कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कंडीशन है क्या दैट वी हैव टू लुक फॉर?
What if it's 1 1 1? Could that be a problematic thing because उसका determinant 0 करते हैं? Oh, okay, right. Oh, it's like if that happens, अगर ये 1 1 1 हो गया, then the only way would be कि oh god, like A equal to 0, B equal to 0, C equal to 0. So 1 1 1 won't work. अपन ने ऑलरेडी बोला है कि अपने को यूनिक एक सॉल्यूशन मिलने वाला है एबीसी के लिए फ्रॉम दिस थिंग. सो इसको भूल जाओ, एच में ऐसा आना चाहिए. सो अगर 1 1 1 रहा तो जो सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी oh shit, it's like 0 0 1, that will be the solution, which means ki oh not good, not good at all. तो 1 1 1 नहीं चल सकता, which means क्या क्या चलेगा, 1 negative 1 1 1 negative 1 and 1 1 negative 1. so 3. okay, that's like a proof or something. मुझे proof नहीं करना था इसका, but ठीक है जो भी है. next question. 163. 163 is the equation of this thing will, okay, this equation will have exactly one root in this interval if एक equation will have exactly one root in the interval 0. हाँ ठीक है, like f of 0 f of negative 1 should be negative, that's all you're saying. Oh, or negative, okay, or you could also have like f of 1 being equal to 0, that also makes sense. Yeah, wait, इसका जो minimum है that's at negative 1 upon 2, right? तो ये तो already उसके oh oh yeah, right, negative 1 upon 2 उसके बाद में वो बढ़ते जाएगा, so at 0 it could be negative and then when it's like positive, that's the only way इसमें एक exact solution है. So at 0 it should be negative, मतलब कि 2a is less than 0, a is less than 0 basically. And at 1 it can be equal to 0 or bigger than 0. So it's like 2 plus 2a bigger than or equal to 0. A bigger than or equal to negative 1. Oh yes, it's negative 1 to 0. That's the range. So A is the answer. Next question. 164. 164 is what? The set of values of p for which the extrema of this function lies in the interval negative 2 to 4. Extrema of this function lies in this interval. This doesn't look so good. इसका एक ही एक्सट्रीमा है क्या शायद से, आई गेस सो. 3x स्क्वायर माइनस, यार ये थोड़ा अजीब ही दिख रहा है. ओके, oh this looks familiar, isn't it? X cube plus minus 3p x square plus 3p square x plus 1. We don't want plus 1, we don't want like p cube. Okay, this is like x minus p का cube नेगेटिव पी क्यूब प्लस पी क्यूब, so उसमें एक पी क्यूब मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया. यहाँ पे नेगेटिव 3x ऑलरेडी था, प्लस पी क्यूब एंड देन प्लस 1, राइट राइट. सो लाइक x प्लस पी को तुम u बोलो, इट्स u का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ u प्लस p क्यूब प्लस 1, which is like what, u cube minus 3u like plus p cube minus 3p plus 1, whatever. So डेरिवेटिव क्या होगा, it's just 3u squared minus 3. So whenever this is 0, that's also, हाँ ठीक है ना, in terms of u मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है, तो कुछ खास किया है, just u squared equal to 1, which means u equal to plus minus 1. तब अपने को इसका एक्सट्रीमा मिलेगा, right? And what was u now? It was just x plus, so x minus p, like x is equal to p plus minus 1, that would be the right. So both the extrema, right? Okay, so p plus minus 1 दोनों lie करते हैं इसमें, which means p plus 1 is less than 4, p minus 1 is bigger than negative 2, right? Oh yeah. So p is less than 3 and p is bigger than negative 1. So negative 1 to 3, which is C. Next question. 165. 165 is the number of ordered triples, triples of positive integers to satisfy this inequality is, okay? So bigger than or equal to, wait, what positive integers? Okay. Plus y plus z are like positive integers and these should satisfy this inequality. Huh? It's interesting. So think about it. ऐसा कब होता है? So like equal to 20 कर सकते हो फिर equal to, right? I think I've seen it. Okay, मुझे नहीं चाहिए सब. Let's think about ये 20 कब equal होगा? जब ये 20 के equal होगा, that happens when s plus y plus w. Okay, और वो ordered pairs चाहिए अपने को, right?
yes, not the set itself, which is like the Star Wars theorem. So इसमें क्या दो partitions, दो bars, तीन partitions, दो bars, and then 20 stars or n stars जहाँ पे n is like 20 to 50. So just like what summation of n plus 2 C2 from n equal to 20 to 50, right? That's the thing. So ये क्या हो जाएगा? Just 22 C2 and then plus 20, like I've seen this somewhere, 23 C2 and चलते जाओ till 52 C2. So you can, and this was unexpected actually. 22 C2 plus 23 C2. That is the problematic thing. यहाँ पे C2 कैसे आया? Okay, like let's start from 0 से, okay, 2 C2, 2 C2 से start करते हैं, 2 C2 to n C2 अपने को करना suppose, then 2 C2 plus 3 C2 आएगा, 2 C2 को देखो 3 C3, and use that thing to get basically what, like 4C, so NC, yeah, like n plus 1 CR plus 1, or okay, that's just equal to n CR plus 1 plus NCR, मतलब कि यहाँ पे 2 3 का 3 होगा, and then वो 3 propagate हो जाएगा, जिस क्या था पे यहाँ पे, yes, so this will be like what, 53 C3 minus कौन से टर्म्स मिसिंग है, 21 तक मिसिंग है, राइट? 21 का क्या वो सम क्या होने वाला है, 22 C3, आई गेस that makes sense. So this is the answer. Yeah, so 53 C3 minus 20 C3, 20 C3, wait, what? This is not 20 C3. uh Something went wrong. Oh, okay. So zero is not actually good. Something already. Oh yeah, okay. Zero is not good. So अपने को already एक तो इसमें डालना ही पड़ेगा. So those positive integers. So basically n कहाँ से कहाँ जाएगा? In that case, it's going to go from 17 to 47 in that case. So यहाँ पे वो डाल देंगे, which is like 50 C3 minus 19 C3. Wait, what? Huh? What's like 16 zeros? Oof, this is not going good. 19 C3. Okay. So 50 C3 minus 19 C3, which is A. Next question. 166. 166. Okay. क्या है? In triangle ABC, if A equal to 30 degree and B bonds equal to this thing, then the measure of angle C is, okay, 2 plus root of 3 plus root of 2 minus 1 upon 2 plus root of 3 minus root of 2 plus 1. So okay, cool. We can probably rationalize something. Okay. So, not exactly what we want to. I don't know. Comparative window, maybe. वो कर सकते हैं ना, yes. So it will just be b plus c upon e plus c. पहले तो वो ट्राई करते हैं. So gives what, b plus c upon c minus, because वो subtract करना पड़ेगा. Wait, no, b minus c करता हूँ. 1b minus c, that's equal to, so plus किया है, just 2 plus square root 3 times 2 आएगा, और नीचे आएगा subtract किया square root 2 minus 1 आएगा, right? Yeah. Now think about it. What? ये देखा सा लग रहा है. Yes, I have seen somewhere. It's like the square of something, or wait, 2 plus square. Oh, yeah, I have seen this somewhere. Sure. Square 2 minus 1. Probably पहले rationalize करना चाहिए. Pehले square 2 plus 1. So this is what? So 2 plus square 3 times square 2 plus 1, which is, I don't think ये अच्छा idea था in any case. So 2 square 2 plus sort of 6 plus. नहीं, this was not a good idea. We actually have to like simplify this in some way. Otherwise, there's no hope. हाँ ठीक है ना, तो अपने करना क्या है बेसिकली ये सब करके? Measure of angle C is, that's B or C, and angle A is 30 degrees. That's what you're saying? Awesome. If that is the case, then actually you can write B is a function of C or something. Right. That does make sense. ये क्या हो जाएगा? Sin B plus sin C upon sin B minus sin. Okay, तो जब तुम इसको में करोगे, what you get is like just 2 sin B plus C, और फिर आप sin minus C, cosine of the difference. Okay.
So 2 sine of b plus c upon 2 cosine of b minus c upon 2 यहाँ पे क्या जगह 2 sine of b minus c upon 2 cosine of b plus c upon 2. So basically what tan of b plus c upon 2 upon tan of b minus c upon 2. Interesting. So b plus c is like pi minus 8, which is okay. So basically tan of x cot minus 1 upon tan. Okay, directly cot में लिखो ना. So just cot a upon 2 and then cot b minus c upon 2. अब अच्छी बात ये कि then a is what? I mean yeah, you can just a plus b minus c plus a कर सकते हो I guess. Then a plus b is मैं क्या कर रहा हूँ इसमें इतना so write b in terms of c completely. So b plus 30 degree plus c is equal to 180 degree. So b is just equal to what? B is equal to 150 degree minus c. So if you put just cot a upon 2 is like cot of 30 degree upon 2. And then cot of 150 degree minus c upon 2. Okay, minus 2c upon 2. Okay, this upon minus c basically, right? That is equal to ये जो भी चीज थी गंदी वाली, right? So oh okay, इसलिए वो सब है. Fine, understood. Started to understand क्या हो रहा था यहाँ पे. So this is equal to that. मतलब क्या है tan of 30 degree upon tan of 15 degree and tan of 75 degree minus c. Yeah, that's equal to what? Square root of 2 minus 1 upon 2 plus square root of 3. So like that. So what's tan of 15 degree? How do you figure it out? Like 2t upon sine 30 degrees, the doable part, right? I guess so. नहीं, cot use करते. So sorry, cosine use करते. Minus t squared upon plus t squared is just equal to cosine of 30 degree, which is actually sort of 3 upon 2. So मतलब हुआ कि so t square upon और 2 आ जाएगा ना इसमें. So पहले ऐड करो फिर adding you just get actually okay, पहले मुझे subtract करना पड़ेगा. So denominator minus numerator like 2 minus square root 3 upon just 2 plus square root 3 I guess, because is that correct or not? Denominator plus numerator, sorry, next subtract numerator, okay, upon denominator plus numerator, okay, which is just 2 minus square root 3 का square. So let's think t equal to 2 minus square root of 3. Okay, so ये जो चीज़ है just 2 minus square root of 3 और ये तो 2 minus square root 3 है ही in fact. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गया. Missed this thing basically. So इसको अपने को tan something लिखना है, right? It's tan of something probably. Okay, so tan of 2 times of ये क्या होगा? So 2t upon, okay, just do this thing, 2 square root of 2 minus 1 upon 1 plus t squared, 1 minus t squared, sorry, 1 minus what? 3 minus square root of 2. मतलब कि this is 2 times square root of minus 1 upon negative 2 minus that, just negative 2 common लिया, it's just what? 1 plus square root of 2. Wait, what? That doesn't make any sense. The tan of this is not making any sense. Tan of 75 degrees you are saying. It's like 90 degree minus 15 degree minus c. Isn't that right? Basically what you're saying is like cot of, right? So cot 15 degree plus c is equal to square root of minus 1. So tan of 15 degree plus c is equal to square root of plus 1. Now we have to deal with this somehow. I just want like, come on, think about it. What if like this may cosine of this, okay, 2 times of that, right? So just cosine of 30 degree plus c or something like that. This is equal to what? So 1 minus t squared, just ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है कि 3 plus 2 sort of 2 upon 1 plus t, is like 1 plus 3 plus 2 sort of. तो क्या हो जाएगा एक्चुअली में? It's like minus 2. ठीक है, minus 2 बाहर आ गया. It's just 1 plus square root of 2 और नीचे क्या आ रहा है? Okay, probably like we can get 2 square root of 2 out or something, and then it's just square root of 2 plus 1. So ये तो गया है just this thing, मतलब कि क्या negative 1 upon square root of 2. That's it. That's only this thing. So that means 30 degree plus c is equal to
180 degree minus 45 degree, right? It's like 135 degree. So C is just 105 degree in that case. So measure of angle C is just 105 degree or something like that. Oh, it should be 2C over there, sorry. So 2C is 105 degree. C is, yeah, 52 and a half. That looks correct. So C is the answer. Next question. Okay, so 1 घंटा हो गया. Fine. मतलब 4 questions बचे. Should do them and pack up. 167. In a square matrix A of order 3, the elements this are the sum of the roots of this equation. Are the sum what? AII. So diagonal elements are the sum of the roots of this. Okay, so like सारे A plus B and AII plus 1 ऑर्डर 3 बोल रहे हो. ओके, सो ये सारे A plus B है, A plus B, A plus B and AI I plus 1 are the product of the roots. So कैसे करते थे? Like mth row, ith row and I plus 1th column. So ith row यानी कि यहाँ से I plus 1. So for example, I equal to 0 is 1 यानी कि 1 row and second column. So it will be this thing, I guess. So ये चीज, right? Okay, that is the product of these roots. And then okay, फिर ये नीचे are all unity. So ये unity है, just AB over there. This is AB. This thing is 1. Rest all elements are just 0. Okay, so basically ये ऐसा है. Fine. The value of the denominator. Oh come on, seriously? Are you serious? It's like what? A plus B का cube कर दो पहले तो. Fine, that is the thing. फिर plus arrange कर दो यहाँ पे. I guess you could subtract or something. Okay, whatever. यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? Starting thing कोई और तरीका हो सकता है इसका better. Well, whatever, just do it. So इसको repeat करो. A plus B 1 0 A B A plus B 1. पहले ये चीज A plus B का क्यूब, फिर ये चीज तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. ओके, फिर माइनस पहले ये चीज 0. ओके, then this thing which is AB times A plus B, and then ये चीज which is once again is minus AB and then A plus B. So basically like A plus B times A plus B का square minus 2AB, यानी कि A square plus B square basically, right? So this is D in that case. Next question, 168. The tangent at the point alpha on the ellipse meets the auxiliary circle in 2 points which separate a right angle at the center. Oh, at the center it's a right angle. The eccentricity E of the ellipse is given by. Okay, it's like get it, but still it's weird. 2 points which subtend a right angle at the center. Guess you can actually find out वो क्या होने वाले हैं, right? Yeah, this doesn't look so bad. Okay, you can figure out a tangent, you can figure out the circle क्या है. Yes. And oh, then you can figure out a pair of straight lines, of course. So just circle है, that's just this thing, x squared plus y squared equal to a squared. And the tangent is like x naught x upon a squared. और एक काम करो ना, so it's like alpha eccentric angle है probably, right? Just use that in that case. So basically like what, x upon a cosine of alpha plus y sine alpha upon b is equal to 1. But then what you can do is just 1 का square करो फिर यहाँ पे डाल दो. Yeah, that's the thing. Basically तुम्हें क्या मिलेगा, x squared plus y squared is equal to a squared times इसका square, इस पूरी चीज का square, right? That's like a pair of straight line I guess, because yeah, मतलब अपने homogeneous square का hopefully काम कर जाएगा. Is this thing x squared c squared upon a squared plus 2xy sc upon ab plus y squared s squared upon b squared, right? So वो जो 2 points रह गए वो इसको satisfy करते हैं, this pair of straight lines, right? और for 0, 0 इसको satisfy करता है. So yeah, that actually explains everything. Okay, so we can write like what, x squared plus y squared is equal to x squared c squared plus a upon b. So okay, 2sc times a upon b, and then you got xy
जो स्लोप है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर टाइम्स s स्क्वायर y स्क्वायर, राइट. सो वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट दिस थिंग, वी ओनली केयर अबाउट दी. या ओके, सो इसको इधर भेज दो. जस्ट ये उसका इधर भेज तो क्या मिलेगा, जस्ट नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर. इसको उधर भेजो, व्हाट यू गेट, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 1 पे y स्क्वायर. यहाँ पे ये जो भी है, so m1 m2 that's just equal to negative sine squared upon ये सब. So the only way this could be -1 is that if sine squared is equal to a squared upon b squared sine squared minus 1. Yeah, and what you want, just want eccentricity. Well, this does look correct. So इसको which is 1 is equal to a squared minus b squared, I guess, because on b squared sine squared. So this is like a squared e squared, isn't that right? And this thing is just a squared plus a squared. Basically क्या हो रहा है, just e squared upon 1 plus e squared, I guess. Wait, no, it's 1 minus actually. So your sine squared of alpha is just equal to 1 minus e squared upon e squared, right? Okay, and अपने को अब e squared ढूंढना है. Okay, so that just means यहाँ पे e squared डाल दो, और e squared times sine squared of alpha plus 1 is equal to 1. So C is the answer. Next question. 169. बस दो और. आई नो मैं ऑलरेडी टाइम ले चुका हूँ तुम्हारा 1 घंटे से ऊपर, बट स्टिल बस दो और. 169. Okay, if a variable line drawn through the origin meets at least one of the sides of triangle to the distance this, then the range of its slope is at least one of. Wait, what? Variable line drawn through origin. Acha, okay, understood. So right, just figure out those slopes, and it's through the origin. You are saying, you should have told me. Just इसका slope क्या है 2, इसका slope क्या है, इसका slope है 1/4. You should probably just graph this out. So 1,2 somewhere over here, and then you want 4,1 over here, I guess. And then 4,4. So here ऐसा रहेगा. इसका जो slope है that actually lies in this range probably. So ये slope रहेगा 2. This slope is 1, and this slope is just 1/4. So 1/4 to 2. That is the range of the slope, which is D. Next question. At least एक side से pass करना चाहिए. Then this is the thing. Okay. At least एक side से pass यानी कि triangle के through pass हुआ है. That's the thing, right? Okay, 170. Equation of shit. It's not okay. Let's say coincide कर side से, then it passes through it, I guess so. Equation of line tangent to this parabola for all values of parameter t is, wait, for all values of parameter t. Oh, okay, you should have told me. ये तो बस normal अपना parameterization जो रहेगा वैसा ही है. Fine, whatever. So this is like what, x minus 1 का square is equal to 4y minus 12. मतलब 4 times of y minus 3. Usually क्या रहता है? Usually रहता है just, you know, y is equal to negative tx plus 2t plus 8 cubed. Like in this case, like a1 is just 2t plus t cubed. But okay, इसमें y plus tx लिखूंगा in fact. So xt plus y is equal to this thing. ये t नहीं है, just plus था, sorry. Right. In this case though, x क्या है? Y minus 3 and t, and then plus y को replace करेंगे x minus 1 से. So this will be the thing. 2t plus t cubed, which means like x plus yt is equal to 1 plus 3t plus 2 is like 5t plus t cubed. So yeah, x plus yt कहाँ पर है? Wait, what xt इसमें क्यों आया? Oh, so you're using some other parameter t. Okay. Just say 1 upon t जो है, let's call that as the thing. Okay, that probably is what they are doing. जो भी है. Yeah, wait. I have a better idea. Wait. हर जगह पे xt दिख रहा है तुम्हें, कहीं भी yt तो नहीं दिख रहा है. Which means just 1 upon t को t से रिप्लेस करो. Just x. Okay, x plus y upon t is equal to, वैसे फिर t की पावर -1 वगैरह आएगा, which is not here actually. Yeah, that's unexpected. ऐसा क्यों चाहिए था? This should not have happened. Shit, tangent चाहिए अपने को, not normal. इसलिए गलत हुआ. Fine. So क्या
वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, राइट। इन दिस केस क्या होगा, वाई की जगह पे ये चीज विच इज एक्स माइनस वन, सो जस्ट एक्स टी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ये चीज वाई माइनस थ्री प्लस ए की जगह पे जस्ट वन, 3 plus 8 is equal to t squared, right? Yeah, that's the thing. Which means xt minus y is equal to t square plus t minus 3. Which is not this thing, okay. We want xt minus y. नहीं ये तो गलत है. Right, so A is the answer. That's it. Okay, so I'll see you guys next video. वो जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत ही मैंने उसको मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन कर दिया एकदम, इतना रिगर चाहिए नहीं था. Anyway, bye.